Last weekend, I visited a showroom with a friend. He was planning to buy a car, so we went for a test drive. A salesman came and he dumped every information he knew on us: prices, discounts, comparison, offers, sab kuch. He didn't stop. After a few minutes, my friend leaned towards me and whispered, "Yaar, he's trying too hard. Let's go somewhere else." And in that moment, I realized something very important. Even if you are saying right things, saying too much can go against you. The salesman was knowledgeable, he knew the product, but still he lost the deal. We didn't leave because product was bad. We left because experience was exhausting, and you have seen this everywhere. That one friend जो मेन पॉइंट बताने से पहले पूरी कहानी शुरू से स्टार्ट करता है। ऑफिस में वो कलीग जो इतना बोलता है कि कुछ टाइम के बाद हम सिर्फ ओके, हाँ, हूँ यही करता है। Not because we agree, but because we have already stopped listening. And this is very dangerous because most people don't even realize that they are doing this. What these people need to learn is the art of saying less. The art of saying less is the discipline of delivering maximum impact with minimum words. Now pay attention to this. If you understand the psychology, this becomes obvious. First is cognitive load. The brain has limited capacity. When you speak too much, you overload the listener. You keep adding additional inputs. And here is what happens: they won't interrupt you, but they have already stopped listening. Your message doesn't fail because it's wrong, it fails because it's too much. When you say less, the brain processes it easily and you get understood. The second point is social signaling. People constantly judge your confidence. Subconsciously, when you over explain, you keep talking, justify too much, you are not showing clarity, you are signaling insecurity. Let me say this very clearly: over explaining is not clarity, it's lack of confidence. On the other hand, when you speak clearly and stop on time, you signal authority. Third point is scarcity effect. Rare things feel valuable. Same is the case with words. When words are limited and clear, people assume they carry weight. But when you keep talking, you flood the listener. And when everything is said, nothing feels important. Now, the real question is, when do we do over talking? People usually feel they do over talking randomly, but this is wrong. There are specific situations when we do over talking. First is whenever we are emotional. जब हम इमोशंस में होते हैं तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्ट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा ओवर टॉकिंग कर देते हैं. सेकेंड इज व्हेन वी आर ट्राइंग टू सीक वैलिडेशन. सामने वाले को मेरी बात समझ में आई, वो मेरे साथ एग्री कर रहे हैं या नहीं है, इस कोशिश में हम बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स ऐड करते जाते हैं और हम नोइंगली और अननोइंगली ओवर टॉकिंग की तरफ बढ़ जाते हैं. थर्ड इज व्हेन वी आर ट्राइंग टू प्रूव समथिंग, because in that moment of trying to prove something, we keep on adding additional unnecessary points. क्योंकि जब हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो हम जीतना चाहते हैं, उस टाइम पे हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते हैं. एंड फोर्थ इज वेरी इंटरेस्टिंग. मोस्ट ऑफ द पीपल टेंड टू ओवर टॉक when they are in position of power. I have seen many senior corporate leaders doing most of the over talking. Many people, while talking to juniors, don't communicate, they dominate. And domination often sounds like over talking. So now that you know the problem, let's try to fix this over talking issue. To master the art of saying less, you need to control both your communication habits and your psychology. Most of the over talking happens when emotions take over. जब हम इमोशन के मोमेंट पे होते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं और हम वो सारी चीज़ें बोल देते हैं.
जिसकी वजह से वो ओवर टॉकिंग में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट इज स्पीक टू एड वैल्यू, नॉट टू फिल साइलेंस। आपको तभी अपनी बात को बोलना है या एक एडिशनल पॉइंट को बोलना है जब आप उस पॉइंट से कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो कॉन्वर्सेशन। So before speaking, you need to ask yourself, am I adding value to the conversation or just adding noise? Third point is compress your thinking. हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, we have to compress. So the best way to practice this is, आप जर्नलिंग करते हो, जब आप लिखते हो चीज़ों को अपने पेज पे, आप एक बार सारी चीज़ें लिख लो, उसके बाद सेम चीज़ को कोशिश करो कि आप 50% स्पेस में लिखो। नेक्स्ट टाइम ट्राई टू रिड्यूस इट टू 20%। इससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे आप सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करोगे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। Whenever you are trying to participate in a conversation, always remember आपको unnecessary words use नहीं करने हैं, आपको try to stick to the main point, पूरा background देने की ज़रूरत नहीं है until unless it is required. फोर्थ पॉइंट इज ऑब्जर्व द लिसनर। अगर लिसनर डिस्ट्रैक्टेड दिख रहा है या सिर्फ नॉड कर रहा है या उसके एक्सप्रेशन से आपको लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, दैट इज द मोमेंट फॉर यू टू स्टॉप। फिफ्थ पॉइंट इज यूज क्वेश्चंस। इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, आस्क क्वेश्चंस। इट शिफ्ट्स द एफर्ट टू द अदर पर्सन, जिससे आपकी ओवर टॉकिंग ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है क्योंकि वो भी कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करने लगता है। सिक्स्थ इज यूज पॉजेज। आप अपनी बात को बोलो, थोड़ा पॉज लो, डोंट ट्राई टू फिल द गैप, बिकॉज साइलेंस इज द प्लेस वेयर योर इम्पैक्ट लैंड्स। रिमेंबर दिस, द मोर यू स्पीक, द लेस पीपल वैल्यू इट, एंड द लेस यू स्पीक, द मोर पीपल रिमेंबर इट। Words don't define your intelligence, they define your control. So from today, don't try to say more, try to say better and stop.